Okay. Yeah. So yeah, prices aside, so what we have mentioned till now, giving a quick summary, how you can make a team. So team could be of 1 to 4 members. At least one member should belong to a university where GDSC is situated. No, graduates and employees cannot take part in this because it is for students only. Okay. Coming to second part, what is the problem statement? Problem statement consists of 17 UN goals. What these goals are, it includes uh, basic things such as quality education, women equality. Then we have uh, quality education, health and fitness. Basically, you can think about any idea and it would come under the 17 goals. Okay. Uh, Now, so yeah, this is a website where you can actually look into what all kind of problem statement that we have. So let's start with, let's say we have no poverty or zero hunger, we have good health. So what exactly does do they want to achieve in this? So you can go into the first goal, and it takes a while to load. Yeah. So they have their overview, like what are their stats, like increase in code has given rise to extreme poverty generation. ठीक है, एंड यू कैन लुक इनटू फैक्ट्स एंड थिंग्स. ठीक है, ये सारी चीज आप देख सकते हो एंड आप कुछ भी सॉल्यूशन बनाओ. ठीक है, कि जो इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को कितना भी इवन इन अ स्लाइटेस्ट मैनर, इफ इट हेल्प्स इट काउंट्स. uh, Guys, a small moment. Actually, that's what I'm. Steve. Okay, Steve. That's what I mentioned कि हम लोग ने 100 तक का रखा था and we got more than expected peoples. So we do not actually right now have capacity to handle all of them together. We didn't got Zoom right from college this time, but we'll manage it from next time. So sorry about that. We'll share the recording afterwards. Okay, now, sorry, continuing to it. So, what targets and indications do we have for each goal? You can also look into it, and it will give you a better clue कि उन लोग को नो पॉवर्टी में क्या चाहिए. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक फ्रॉम माई सेल्फ, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं नो पॉवर्टी के लिए क्या कर सकता हूँ. आई कैन नॉट आई एम नॉट मार्क, अरे आई एम नॉट एलॉन मस्क दैट आई विल बी एबल टू डोनेट बिलियंस ऑफ डॉलर. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना. और तो there are different solutions that you can look into, such as the, just giving an examples, these have been submitted previously if I'm not wrong. So there have been made up some donation apps. So donation apps, like you can make an app that targets that have some certain NGOs in it, and a person can donate to certain NGOs however they like. Okay, so you can make any kind of things that would help them to achieve this kind of goals. ठीक है. Now प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लेने का, उसको कैसे बेटर तरीके से एनालाइज करने का, दैट वुड बी एक्सप्लेन्ड बाय माय फ्रेंड हर्षित. Okay, so then we looked into what all prices do we have. Next step, we have judging criteria. So let's say आप लोगों ने सबमिट कर दिया. ठीक है, तो नाउ ये कैसे जज होएगा, आपको कौन सी चीज़ों पे पॉइंट्स मिलेंगे, एंड हाउ यू गाइस कैन लाइक व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर हेड व्हाइल मेकिंग थिंग्स. ठीक है, तो there are two different categories. One is technology and one is impact. ठीक है, now for all the project, one required criteria is कि तुम लोग को एटलीस्ट कोई भी एक गूगल टेक्नोलॉजी यूज करना है. ठीक है, let it be Flutter, TensorFlow, or PWAs, or Google Cloud, or it could be Firebase, or you can use anything that Google provides. Even Android works. तो आप कुछ भी एक चीज यूज करो कि that belongs, like it belongs to Google technologies, and yeah, you are good to go.
Yes, Dhruv, we will come on to those things as well. ठीक है. नाउ इम्पैक्ट, तो फर्स्ट थिंग इज एन इम्पैक्ट कि आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आप सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हो वो कितना इम्पैक्टफुल है. सेकेंड थिंग इज कि हाउ हाउ इफेक्टिवली यू गाइज आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. दैट इज द सेकेंड थिंग अंडर द इम्पैक्ट. थर्ड चीज है कि आपका कितना अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है, नॉट जस्ट ओनली रिलेटेड कि आपने अभी तक जो बनाया, प्लस कि आप आगे इसको कैसे लेके जा सकते हो. ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि हम लोग ने बोल दिया कि मैं इसके अंदर ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ. यू हैव टू प्रूव इट कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर एविडेंट फ्रॉम माई करंट सॉल्यूशन. ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही जाके नहीं बोल सकता कि ये गेम है मैंने बहुत अच्छे से बनाया, या ये ऐप है मैंने बहुत अच्छे से बनाया, ये कल को मैं प्ले स्टोर पे डालूंगा, इसको बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज मिलेंगे, मुझे उससे फंड रेजिंग होगा. आपको लाइक ये बोलने से प्रूव नहीं होता है ना कि ऐसा होगा. यू हैव टू पुट फोर्थ सम फैक्चुअल एविडेंसेस. लाइक आप पहले से रिलीज करके रखो, बेटा रिलीज रखो, या यू गाइस कैन हैव प्री लाइक अपना होता है ना कि कोई चीज स्टार्ट होगा उसके पहले से हम लोग उसका प्री बुकिंग करते हैं. जैसे वैसे आप रख सकते हो कि हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस अपकमिंग ऐप, आप उसके काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन रख सकते हो जस्ट टू प्रूव दैट, प्रूव योर पॉइंट कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि मैं जब ऐप रिलीज करूंगा तो मुझे इतने डाउनलोड्स मिलेंगे. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग कि आप जो भी फ्यूचर का एक्सटेंशन बोल रहे हो वो भी एविडेंट होना चाहिए. ठीक है, ओके. देन या इज एविडेंस, आपने जो अभी बनाया है चीज वो, यूजुअली हैकाथॉन्स में ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन्स में मैंने एक सॉल्यूशन बनाया. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे कॉलेज, अपना कॉलेज अभी ओपन होएगा. ठीक है, तो आई मेड एन ये अपना कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया. ठीक है, तो देन आई शुड बी मेरे को वो सिर्फ बना के नहीं रखना है, मेरे को बना के अब डिप्लॉय करना है. जब यूजर्स उसको यूज करेंगे मुझे उसको फीडबैक लेके मेरे ऐप में इम्प्रूवमेंट करना है. ये जब साइकिल कंप्लीट होगा ना देन इट विल बी काउंटेड कि तुम लोग ने इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क किया है. इट इज वन ऑफ द जजिंग क्राइटेरियाज. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू टेक्नोलॉजी साइड, तो आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो. ठीक है, एंड वो गूगल टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से यूज कर रहे हो कि नहीं. ठीक है, देन आपको एक वीडियो सबमिशन करना होगा, तो अब वो वीडियो के अंदर आपने जो टेक्नोलॉजी यूज किया है उसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो देखा जाएगा. एंड द फोर्थ वुड बी कि तुम लोगों ने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया, आपका जो सोल्यूशन है वो कितना इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल डिसीजंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने आज बोला कि मुझे फ्लटर यूज करना है. ठीक है, एंड मैंने फ्लटर यूज करके मैंने अपना एक मोबाइल ऐप बनाया. तो वो जजेस क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने फ्लटर ही क्यों यूज किया, आपने कॉटलिन क्यों यूज नहीं किया, आपने जावा से क्यों नहीं बनाया. क्यों, अगर मुझे सिर्फ एंड्रॉयड ऐप ही बनाना था तो मैं फ्लटर को यूज करने का यूज नहीं था ना. लाइक मैं कॉटलिन और उसको अपना जावा यूज करके भी बना सकता था. यू हैव टू बी वेरी थरो विथ योर डिसीजंस कि मैंने स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी क्यों यूज किया है. ठीक है, नाउ दिस थिंग्स आर अबाउट द क्राइटेरियाज. आगे जाते हैं, तो व्हाट विल बी द टाइमलाइन. ठीक है, तो ज्वाइन अ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब. ऑफ कोर्स तुम सब लोग यहाँ पे हो, ऑब्वियसली तुम सब लोग ने रजिस्टर किया ही होगा, हम लोग का क्लब ज्वाइन किया ही है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर registrations? Yes, coming to that, registrations are open. उन्होंने with the meeting with the Google they said कि आपको registrations वो लोग ओपन रखने वाले हैं. द बेस्ट थिंग इज कि तुम लोग जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, क्योंकि दे विल बी रोलिंग आउट रिसोर्सेज. तो जैसे जैसे रिसोर्सेस रोल आउट होंगे, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो यू विल कीप ऑन गेटिंग अपडेट्स एंड ईमेल्स अबाउट इट. तो बेटर है आप रजिस्ट्रेशन कर लो. रजिस्ट्रेशन लिंक भी अभी आ जाएगा आपको चैट में, दैट इज ऑल्सो ओपन. देन स्टेप 3 इज फॉर्मिंग अ टीम. आई वुड से स्टेप 3 एंड स्टेप 4. तो द फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ टीम. तो तुम लोग ये कैसे कर सकते हो टीम फॉर्मिंग का. तो आपके क्लासरूम के अंदर या आपके हम्म, अभी के लिए अपना जो कुछ भी रजिस्ट्रेशन है दैट इज सिंगल. आप हर एक को पर्सनल रजिस्ट्रेशन करने हैं, एंड उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट सबमिशन होगा तब टीम का नाम एंड ऑल देना है. ठीक है,
तो अभी टीम फॉर्मेशन कैसे होगा? यू गाइस कैन गो अराउंड अपना क्लासरूम, तुम लोग के क्लासरूम में आप देख सकते हो कि कौन है कि जिसके साथ आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। एंड टू बी फेयर इनफ, बी ओपन विथ इट। आप इट पॉसिबल है कि आपके टीम के अंदर आप ऐसे को ले लो कि ही इज नॉट वेरी मच acquainted to the environment or things you are using. फॉर एग्जाम्पल समझो कि 3 लोगों का टीम है, तीनों को वेब डेवलपमेंट पसंद है, चौथा बंदा मोबाइल डेवलपमेंट आ गया, ऐप डेवलपमेंट वाला आ गया है, ठीक है। इट इज पॉसिबल। नाउ लर्न टू यूज ईच अदर स्किल्स इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। एंड बी ओपन विथ इट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइक यू विल ऑलवेज गेट समवन हु इज वेरी मच मोर स्किल्ड और इक्वली स्किल्ड एज यू। बी ओपन विथ इट, टेकिंग द पीपल्स हु आर विलिंग टू लर्न, बिकॉज दे विल बी अ लॉट हेल्पफुल इन थ्रू आउट द जर्नी। एंड ये 1-2 दिन का हैकाथॉन नहीं है, यू गाइस हैव गुड फेयर 2 month of time, so it is absolutely possible to learn and build. एंड एज यू कैन सी, उन्होंने भी वही एक्सपेक्ट किया है कि तुम लोग सीखोगे और बनाओगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम लोग का पहले से तुम लोग को कोडिंग आता हो, या पहले से तुम लोग को जो भी चीजें चाहिए वो सारी आती हो, ठीक है। तो वी विल शेयर द रिसोर्सेज कि आप कहाँ से सीख सकते हो। या नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेप, सेलेक्टिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सेलेक्ट करोगे एंड वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन कैसे निकालोगे। सो हर्षित वुड एक्सप्लेन कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन वर्क थ्रू मेकिंग अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट। हर्षित, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट? Harshit, you are on. Good. Yeah, I was muted. Hi everyone. Now we come to the main part. A solution. We need a problem, and how do you find a problem? Uh, there was an introduction to solution challenge session by Google, and one speaker spoke about what would be the process of finding a problem, right? And I found it very helpful. So I would like to share it here. So the first step is identifying a category of the problem. So it could be, let's say, education, healthcare, anything you want, right? Now, once you have identified a category, let's list down, just brainstorm, do Google search, from the problems in that particular sector. So for instance, let's say education, it could be quality of teachers, lack of access, lack of resources, connection with good teachers, anything. It could be anything. Let's say if it is healthcare, then you can list down what are the current problems you face or about. That could be asking why those problems exist, thinking about the causes of those problems, because that is very important. Once you know the causes, then you can only proceed to finding a solution, a viable solution, and solve that particular problem. So education liya, so like let's say lack of access to good teachers हो सकता है, तो उसमें है कि good teachers हैं but वो connect नहीं है एक दूसरे से, स्टूडेंट्स के पास उनका एक्सेस नहीं होता, तो तुम एक ऐप बना सकते हो मे बी जो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करे. Now this is a prototype solution, maybe not a good one, but just this one. So also एक एग्जांपल देता हूँ, जो 2021 में फाइनलिस्ट थे गूगल के, उन्होंने जो सोल्यूशन बनाया था. So the person identified a problem. The problem was कि hospitals में बहुत सारा line रहता है. There are many patients, but there are not very much ज़्यादा doctors नहीं है उनको help करने के लिए, उनको treat करने के लिए, उनको consult करने के लिए. और वो patients का problem इतना complex नहीं है कि उनको ज़्यादा experienced doctors की जरूरत हो. तो वहाँ पे एक जो विनर था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, उसने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे मेडिकल साइंस में इंटर्न्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर्स, बट दे डू हैव द एक्सपीरियंस टू give consultation on what kind of what kind of health problems they are, what could be the solution. So that particular person identified this problem and he developed a solution to connect those medical interns to the patients, and yeah, he won that role. The idea is very simple. So this would be a step. So the first step is identifying a category, then seeing what are the problems, jotting down what are the problems in that particular category, asking why those problems exist. You can do interview with people to find the causes of the problem, or you can Google search. You can do
like it is a process, and it is a time taking process. Uh, but you but if you do it, you will learn quite a lot about the category as well as the kind of problems people face. And once you have done that, next step is developing a solution, which is like, okay, I think we are all smart enough to develop a solution. I don't think we need to take time on it. But identifying a problem is the most important part of solution challenge. Hitansh, over back. Yeah. Yep. As Harshit has greatly explained कि हम लोग कैसे कोई भी एक प्रॉब्लम को लेके उसको अलग अलग व्यू से देख सकते हैं कि व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट एंड हाउ वी कैन गो अबाउट सॉल्विंग इट. ठीक है. नाउ सो व्हेन यू गेट टू द पॉइंट, जैसे टेकिंग दैट सेम एग्जांपल कि हम लोग ने ऑब्जर्व किया देयर इज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग इन एंड उनको उतने स्किल्ड डॉक्टर्स का जरूरत नहीं है. सो डिसाइड कि ठीक है, मैं कुछ एक ऐसा ऐप बना सकता हूँ या मे बी वेबसाइट बना सकता हूँ कि जो एक पेशेंट को एक मे बी प्रैक्टिशनर से कनेक्ट कर सके. ठीक है. नाउ आई गॉट द आइडिया, आई गॉट द सोल्यूशन. ठीक है. बट इट इज नॉट येट इम्प्लीमेंट. सो हाउ वी विल गो अबाउट इट? द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डिसाइड है कि जब मैं ये चीज बनाना चाहता हूँ तो व्हाट थिंग आई नीड, व्हाट इज माई रीच. ठीक है. तो मेरे यूजर्स जो है वो किधर रहेंगे. ठीक है. तो नाउ माई यूजर्स आर मोस्टली ऑन स्मार्टफोन और ऑन पीसीज. ठीक है. दैट इज माई क्वेश्चन कि लाइक उनके पास पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप है या दस डेस्कटॉप्स है, या वो मोस्टली स्मार्टफोन यूज करते हैं. ठीक है. सो आई वांट टू गेट द बिगेस्ट डेमोग्राफिक एंड मोस्ट एक्सेसिबिलिटी. सो दैट वुड बी विथ हेल्प ऑफ स्मार्टफोन. ठीक है. स्मार्टफोन डिसाइड हो गया. सो नाउ व्हाट आई शुड यूज इन स्मार्टफोन टू मेक दिस थिंग. ठीक है. तो नाउ विल आई रिक्वायर अ सर्वर, लाइक क्या मुझे एक कहीं पे डेटा लेके लेने आई मीन सेव करने का जरूरत पड़ेगा जो सबको एक्सेसिबल हो? हाँ, क्योंकि मुझे दो लोगों के बीच में चैट करवाना है. ठीक है. सो आई विल नीड अ सर्वर. नाउ अभी ये सर्वर या डेटाबेस सर्वर ये कहाँ से मिल सकता है मुझे? तो फर्स्ट थिंग आई वुड प्रेफर कि तुम लोग गूगल टेक्नोलॉजीज के अंदर देखो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू रीच द क्राइटेरिया फास्टर. तो देन वी हैव फायरबेस. ठीक है. फायरबेस के अंदर वी हैव लाइव चैट ऑप्शन. ठीक है, जो आपको लाइव डेटाबेस ऑप्शन है. तो जो आपको इट इज अ रियल टाइम डेटाबेस की जो आपको चैट जैसे एप्लीकेशन के अंदर वो परफेक्टली सूटेड है. ठीक है. एंड प्लस अब अगर अभी हम लोग एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो इट विल हैव बेटर सपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली सारे डॉक्यूमेंटेशन गूगल के हैं, सेम प्रोडक्ट लाइक सेम कंपनी में, तो प्रोडक्ट्स भी इंटरनली एक दूसरे लाइक डिपेंडेंसी आसानी से क्लियर हो जाता है. ठीक है. तो दैट इज डिसाइडेड. देन यू कैन कम टू द पार्ट कि अभी ये मेरा ऐप जो है वो मैं एग्जैक्टली कैसे डिजाइन कर सकता हूँ, व्हाट ऑल फीचर्स वुड आई नीड. ठीक है. तो स्टार्ट विद दिस कि सबसे पहले मुझे एक जगह लगेगा कि जहाँ पे एक यूजर आइडेंटिफिकेशन हो, तो मुझे साइन इन साइन अप लगेगा. देन मुझे दो लोगों को बात करवाना है तो मुझे एक चैट फीचर लगेगा. और क्या फीचर लगेगा? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप इट अंडरस्कोप्ड. ठीक है. आप ये मत सोचो कि आपको नेक्स्ट फेसबुक या नेक्स्ट गूगल बनाना है, सब कुछ नहीं डालना है, उतना डालो दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. एंड फिर उसके अंदर यू वी कैन पॉलिश. तुम लोग कुछ ऐसा अलग से फीचर लेके आओ कि दैट वुड बी डिफरेंट, दैट वुड बी द योर द जूस ऑफ द होल सॉल्यूशन, की जो एकदम अलग पर्सपेक्टिव दे दे वो ऐप को या आपके सॉल्यूशन को. ठीक है. इट इज ओके. आप ये सिर्फ दो चीज हो गया. थर्ड चीज रहेगा कि वो प्रॉब्लम डाल पाना चाहिए जो कोई भी पेशेंट है. तो ये तीन चीज को लेके आप कुछ बनाओ एंड देन यू कैन कीप ऑन पॉलिशिंग इट. आप लोग उसको फिर डिप्लॉय करो लोगों को दो यूज करने के लिए. टेक देयर फीडबैक्स. वो लोग बोलेंगे टेक्स्ट कहीं पे छोटा था, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा, बग्स मिलेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ बग्स. डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, वी ऑल फेस बग्स. तो डोंट वरी अबाउट इट. तो यू नो ये करने के बाद आप इटरेट करो एंड ऑल दिस थिंग्स डज मैटर एंड डज काउंट. कि जब ये व्हेन यू विल कंप्लीट द होल प्रोसेस ऑफ इट, तुम लोग को एक्चुअली फील होएगा कि एक्चुअल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं कंपनीज में. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल इन एनी कंपनी, कि तुम लोग को पता हो हाउ द प्रोडक्ट केम फ्रॉम इट्स फ्रॉम योर ब्रेन टू यूजर्स हैंड. वो पूरा जर्नी जब आप समझोगे ना, तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल डिस्कवर अ लॉट ऑफ न्यू
issues and new solutions as well. So don't be afraid of those things. And coming to the solution part, solutions आपको submit मार्च 15 से 31 मार्च तक आपका सबमिशन टेंटेटिवली ऑन रहेगा, आप उसके बीच में सबमिट कर सकते हो. And yeah, after that you will guys receive, hopefully receive this, कि आप select हो गए हो next round के लिए top 50 ones. And then after getting into top 50 you guys will have एक्सेस टू गूगल मेंटर्स. आपको गूगल मेंटर्स प्रोवाइड करेंगे, आप वो मेंटर्स के साथ आपका ऐप प्रेजेंट करिए, वो चेंजेस बोलेंगे, हैव अ गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग, पॉलिश योर ऐप, मेक इट गुड अगेन, एंड आप उसको सबमिट करोगे टॉप 10 के लिए. दैट वुड बी योर फाइनल सबमिशन. अब टॉप 10 के बाद टॉप 3 होगा, एंड दैट्स ऑल, एंड देन यू विन द कॉम्पिटिशन. सो कमिंग टू द टाइमलाइन, तो टाइमलाइन है 11th ऑफ जैन को ये अनाउंस हो चुका था, एंड वी यू गाइस एंड वी ऑल हैव टाइम टिल 15 to 31st March. आप लोग learn and build whatever solution you want to build, and then we submit it. Okay, this is pretty neat image that explains the whole journey of it, कि आपके पास कितना टाइम है एंड कौन से महीने में टेंटेटिवली क्या होगा. आई विल शेयर दिस इमेज अगेन. Yeah, I think the currently the most important one is कि आपको 31st March तक आपका एक सबमिशन करना है. Now, moving on to the next part, that is build and learn and build. Sorry. तो आप कहाँ से सीख सकते हो? The resources are provided by the Googles. आपको गूगल के कोड लैब मिलेंगे. So what is a कोड लैब? कोड लैब के अंदर इंस्ट्रक्शनली उन्होंने पूरा चीज डिस्क्राइब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है प्रोग्राम न्यूरल नेटवर्क विद टेंसरफ्लो. ठीक है, तो टेंसरफ्लो का आपको इंट्रोडक्शन रहेगा वो कोड लैब के अंदर कि व्हाट इज टेंसरफ्लो, आप उसको कैसे इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हो. मे बी कोलैब यूज कर रहे हैं तो वो लोग डायरेक्टली बोलेंगे कोलैब एंड यू हैव एवरीथिंग सेटअप, एंड फिर बताएंगे कि हम लोग टेंसरफ्लो यूज कर रहे हैं, उसका ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके ये पैरामीटर्स है, एंड ये सारा बैकग्राउंड में चीजें होता है. ठीक है, so all these things will be neatly described either in text form or in video. They have both like अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग चीजें अवेलेबल है. कुछ चीज कुछ के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, कुछ के अंदर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, एंड आपको दोनों लाइक आपको जो बेटर पड़ता है वो यूज कीजिए एंड गो अहेड विथ इट. नाउ so this is all from the Google side. Okay, and I will take some questions onto the solution challenge, and then we will move on to uh, things regarding जो हम लोग को एक्स्ट्रा रिसोर्सेस या बाकी का चीजें प्रोवाइड करना है वो. Okay guys, feel free to put in all your questions and everything into the chat. I will start answering them. Okay, okay, so we have a question from Siddharth. It is asking for an idea, do we have to do the entire implementation? तो यस, आपको इम्प्लीमेंट करना है, बट डू नॉट मेक इट लाइक आपको एमवीपी बनाना है, द मिनिमम वैल्यूड प्रोडक्ट. आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दो दैट इज पॉलिश्ड इन वॉट एवर थिंग्स दैट इट हैव. जैसे मैंने अभी बोला कि आपको वो ऐप के लिए 3 फीचर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है, वो 3 फीचर्स डालो एंड मेक इट मोर एंगेजिंग समहाउ योर पेशेंट के लिए. इट बिकम्स more viable than going to the hospitals, and it becomes more जैसे like आप कुछ extra features डाल सकते हो which I am not currently able to guess think about right now. But yeah, you guys will have to figure it out. That's why it is hard and the juice of the app. We have question from Harsh Jha. From where team can form, and okay, yes, सबको individual forms भरने हैं, and then anyone can team up with anyone, that is absolutely okay. And हाँ, that is all. I think Dhruv, the example that was given by Harshit was good. What is the last date of registration timeline?
Okay, so yeah, the team making part is difficult, and there are some suggested methods from the Google I will share. So one of them being is कि अभी जैसे हम लोग का GDSC का व्हाट्सएप ग्रुप है और डिस्कॉर्ड ग्रुप है, ठीक है. सो लेट्स से कि गौरव, ठीक है, गौरव के पास एक आइडिया है. ही वांट्स टू बिल्ड एंड ऐप फॉर elderlies to learn and share their learnings. और लेट्स से एल्डरलीज ने डिसाइड किया कि अपने दादा दादी के पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है हम लोग को सुनाने के लिए. तो दे डिसाइडेड कि हम लोग ऐसा स्टोरीज वगैरह रिकॉर्ड करके ना शेयर करना चाहते हैं, ठीक है. तो यू गाइस आर थिंकिंग कि हम लोग उनके लिए ऐसा एक ऐप बनाएंगे कि जहाँ पे दे कैन record themselves and make a story and it is you know वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो ये बनाने आपने डिसाइड किया तो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज कि आप डालो कि मैं मेरा ये नाम है एंड आई एम लुकिंग फॉर टीम मेंबर्स, इतने लोगों का वैकेंसी है अभी के लिए, एंड मेरा ये आइडिया है, whoever इज इंटरेस्टेड. और अगर आपको आइडिया शेयर नहीं करना है तो वॉट एवर यू नीड, लाइक आपको ऐप बनाना है तो यू विल नीड गाइस हु आर गुड विद एंड्रॉइड डेवलपमेंट. तो आस्क देम कि लाइक अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अच्छे हो तो आई एम लुकिंग फॉर इट, मेरे को एक ऐप बनाना है. सो पुट लाइक आपको ना अभी हम लोग ऑनलाइन है तो वी हैव सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि आप फिजिकली आसान होता है टीम बनाना, बट वर्चुअली भी अभी आपको यू विल हैव टू ओपन अप एंड आस्क एट डिफरेंट फोरम्स कि हु इज अवेलेबल टू टीम अप विथ मी. एंड be open with making teams with strangers because you don't know what would come out of it. You may get some really good people that you didn't expect it. uh, okay, Siddhant, you can there is a page where all the GDSC clubs are indexed. कि सो सिद्धांत क्वेश्चन है कि अगर मेरे कॉलेज के अंदर GDSC है या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा. तो आप GDSC सर्च करो, यू विल फाइंड अ पेज कि जहाँ पे गूगल सारे GDSCs को मेंशन करते हैं एंड यू कैन सर्च अपने कॉलेज के नाम से सर्च कर लो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. अगर कॉलेज के अंदर GDSC है तो वहाँ पे रहेगा. एंड लेट्स से कि आपके कॉलेज में GDSC नहीं है तो टीम अप विथ एनी लाइक नियर बाय कॉलेज कि जहाँ पे GDSC है वहाँ के कोई भी, लाइक आपके टीम में कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो जिसके कॉलेज में GDSC है. यस क्रिश, मैं पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा. Afifa, if I'm not taking your name, sorry, if I'm taking your name correctly, uh, like, yeah, are you asking us or like for, is that a general question और कि ये specific competition को लेके? Because top 50 के बाद ही mentoring start होता है from Google, and before that you can ask someone, either it could be your senior or आपके relatives में है या आप किसी को LinkedIn पे जानते हो who is good in that domain, you can ask them to mentor you. Okay, what are the perks of participations? Uh, like you get a chance to be in one of the biggest hackathons. Like अगर इसको क्रैक करते हो तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग क्योंकि आपका टॉप टेंस का एक डेमो डे होता है. सो इन दैट डेमो डे यू विल गेट टू द होल इंटरेक्शन दैट विल बी अ Q&A बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट. तो लेट्स से आपने जो कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया था, वो क्यों था, ऐसा टाइप. एंड उसके बाद उसका पूरा वीडियो गूगल अपने यूट्यूब चैनल से डालता है. एंड अगेन यू इवन गेट फीचर्ड स्टोरीज, दैट इज गूगल अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां से आपको फीचर करता है. Apart from swags and the prize money that you get after being in top 10 and 50 and all. I'm not sure about goal, so can I register now and decide my goal later? Absolutely, Gaurav. There is an option कि मैंने अभी तक से decide नहीं किया है मुझे किस पे काम करना है. And yeah, there is literally an option in the form. So go ahead with that. Praveen, you can make team outside your college also. That is absolutely okay. The only requirement is कि एक बंदा एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो GDSC को बिलोंग करता है, उसके कॉलेज में GDSC है. Yes, Hemen, it is allowed.
कंपटीशन का आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट हाँ हम लोग जो भी सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं दैट डज हैव AICTE पॉइंट्स. निधि, हम लोगों ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे बिकॉज वी डिडंट हैड GDAC, and yeah, this year we have GDAC, so we are participating. Yeah, good thing that you pointed out, Nidhi. जितने भी प्रीवियस सॉल्यूशंस है वो सारे अवेलेबल है गूगल की वेबसाइट पे, एंड अगेन द लिंक विल बी शेयर्ड. आपका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वहीं पे है ये सारा रिसोर्सेस. यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्निकल रिसोर्सेस देख रहा है, अदर रिसोर्सेस आर आल्सो देयर सच एज कि अपना हाउ टू गिव अ पिच, व्हाट आर गूगल्स वे टू गिव अ पिच, गूगल के कुछ मेथड्स है इवन फॉर प्रोटोटाइपिंग, आइडिया डिस्कशन. जैसे हर्षित ने एक बताया कि हम लोग रूट कॉज तक जाते हैं फिर वहां से हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, दैट इज वन वे. अनदर वे इज क्रेजी 8, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फेमस मेथड्स. उसके अंदर यू गाइस पुट अप एन 8 minute टाइमर एंड गेट योर ऑल टीम मेंबर्स टुगेदर. 8 मिनट का टाइमर रखो एंड आस्क एवरीवन टू गिव 8 आइडियाज और 8 रफ sketches of their ideas in 8 minutes. So 1 minute for one idea thing. आपको वो 8 मिनट के अंदर यू हैव टू पुट इन 8 solutions, so that also gives you a lot of solutions and a lot of ideas to work with. एंड या सो वैसे बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है. गो चेक दैट साइड आउट, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर. अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम, ओके, ओनली ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट भी चलेगा? यस एब्सोल्युटली, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ऐप या वेबसाइट ही बनाना है. वन ऑफ द प्रीवियस सोल्यूशन वाज अबाउट अ ग्लव. सो जितने भी लोग हैं कि दोज हु कैन नॉट स्पीक, फॉर देम दे हैड अ ग्लव. So you just have to they perform sign language and this glove convert those sign languages into audio. So that was one of the previous solutions. So it is absolutely okay if you make hardware solution as well. Okay, about the WhatsApp group, it is full. We are planning to open up another one. We will let you know about that. Yes, WhatsApp group. Maybe we will make another one. While registration is showing, which theme you are choosing? Nope, it will not have an impact. It is just for the survey. Okay, Praveen, if your college is not in the list, you can team up with anyone from our college as well. Like there are a lot of people you can even find in this meeting that are, willing to, they want to make a team. So make a team with them, and yes, it is absolutely okay to have cross college teams. School students, can they participate? I'm not very much sure about it. Uh, Harshit, could you look into it? Can school students participate? Okay, no. Sorry, school students won't be able to participate. Yes, absolutely. Thakur as GDS. I'm the lead of the GDS. Yes, Praveen. Are you on Discord? We have like our Discord. Yeah, Harshit could share the link as well. So, you can join on Discord. A lot of people are there, and there will be a lot of them who are willing to make a team. I think a couple of days back, one was also searching for the team and looking for the people who are participating in hackathons. Can maybe contact him. Okay, I think that's all for the questions. So coming to the next part, uh, solution challenge तो ठीक है. What all things can I do throughout the year? ठीक है. So Google coding competitions. So Google every year have a lot of coding competitions. So what is a coding competition? For those who do not know about it, coding competition के अंदर you get questions that are very specific, being mostly CP के questions रहते हैं. How would I put it in? Harshad, could you, define CP more better than me? Like these are basically algorithms and optimization problem. तो यहाँ पे तुम्हें like जैसे मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम मिलता था,
वैसे काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ओनली यू हैव टू सॉल्व देम यूजिंग एडवांस एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड या इतना सही रहता है, लाइक सिंपली पुट। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है but, सो हाँ, अपने कॉलेज के अंदर कोडिंग क्लब भी है. These guys promote, even Harshit is part of coding club. So these people help you, get better into CP. They put every day they put in 3 questions related to competitive programming. So if you want to get started, do join those clubs as well. They are pretty good with this. एंड ओके, सो ये 3 कंपटीशन होती है, हैश कोड, कोड जैम एंड किकस्टार्ट. तीनों का मैं डिफरेंशिएशन बताता हूँ. सो हैश कोड इज अ टीम कंपटीशन. 4 लोगों का टीम बना सकते हो मैक्सिमम. इट इज अ ह्यूरिस्टिक बेस्ड कंपटीशन. इसका कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं होता है, कुछ भी करेक्ट आंसर नहीं होता है. जस्ट कि मेरा आंसर पहले वाले आंसर से बेटर हो सकता है. ठीक है, दैट इज इट. देन कोडिंग कोड जैम है. कोड जैम अगेन वो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन पे है. it have 3 to 4 rounds, and in the first round you have to get 30 points to move on to the next one, and so on so forth. ठीक है, कोड जैम इंटरमीडिएट लेवल का है. एंड किक स्टार्ट इज द बिगनर फ्रेंडली कॉम्पिटिशन. इट विल स्टार्ट अगेन. इट हैव राउंड फ्रॉम A to F. वो एक एक मंथ के गैप पे होता है, ऑलमोस्ट हर एक मंथ में एक बार होता है. एंड या यू कैन सर्च अबाउट इट. आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट इज प्रिटी गुड स्टार्ट पॉइंट फॉर एनी बिगनर्स. एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का क्या फायदा होता है, सो लाइक द फर्स्ट थिंग इज दैट यू गेट द रिकग्निशन कि आप गूगल की कंपटीशन के अंदर यू आर गेटिंग सर्टन रैंक. दिस competitions have a lot of weight कि this ranks have a lot of weight than your code chef or code forces ranks or stars. Yes, Siddhant. Any graduate can participate in these competitions. ठीक है, मूविंग ऑन. फेसबुक. फेसबुक का हैकर कप होता है. हैकर कप के अंदर दैट इज अगेन कोडिंग कंपटीशन है. वो गूगल का जिस कोडिंग कंपटीशन से वैसे ही. इसके अंदर आपका अच्छा परफॉर्म करने का फायदा ये होता है कि यू मे गेट ए चांस फॉर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट थिंग्स. ठीक है, दिस ऑल कॉम्पिटिशन गिव्स यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिकग्निशन. अगर आप ये चीज़ों के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो ना, तो यू गेट अ सर्टन लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी दैट यू कैन नॉट गेट अदरवाइज अराउंड. एंड सिंपली पुट, कॉम्पिटिशन्स को मैं लाइक आप डू नॉट अंडर वैल्यू एनी कॉम्पिटिशन. ये सारे कॉम्पिटिशन्स का बहुत वैल्यू है. इफ यू गेट चांस, जस्ट like just participate in those. Okay, the next one is Smart India Hackathon. It is coming up. So those belong to our college will know about it कि अपने कॉलेज ने फॉर्म सर्कुलेट किया था, है ना. तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसा भी सॉल्यूशन चैलेंज हैकाथॉन है, वैसे स्मार्ट इंडिया चैलेंज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी एक हैकाथॉन है. उसके अंदर सॉफ्टवेयर के 423 प्रॉब्लम्स है एंड हार्डवेयर के अराउंड 50-60 प्रॉब्लम्स है. वहाँ पे बहुत डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है. ठीक है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ओपन करो एंड आपको वो गो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से गो थ्रू करो. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करो, पुट अप डिसाइड अ सॉल्यूशन, मेक सम पीपीटीज आउट ऑफ इट, मेक सम फ्लो चार्ट्स, सम गुड एल्गोरिथम्स बिहाइंड इट कि ये मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा. इफ इट इज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का है तो कुछ प्रोटोटाइपिंग करके देखो. यू हैव लॉट ऑफ 3D सॉफ्टवेयर. तो वो सब करने के बाद यू कैन प्रेजेंट इट ऑन टू द कॉलेज लेवल. कॉलेज लेवल के अंदर से 5 सॉफ्टवेयर का टीम, 2 हार्डवेयर का टीम मूव ऑन होगा एंड वो टीम्स नेशनल लेवल पे compete करेंगे. सो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का वैल्यू बताते हुए ये बोल सकता हूँ कि अपना one of the previous team, like a lot of previous teams from our college have won a Smart India hackathon. One of them was able to sell its IP and they are still getting benefited through its royalty. So you can understand, like बहुत बड़ा चीज़ है. Then we have AWS ML challenge. तो AWS पता ही होगा, Amazon Web Services. वो every year machine learning challenges एक machine learning का challenge होता है. It will provide you with the data set and what is expected from it. This year it was based on NLP. And yeah, then we have NASA Space App Challenge. Again, NASA के अंदर उनके specific problem statements होते हैं कि हम लोगों को ये चीज़ें चाहिए. तो जो कुछ मैं याद कर पा रहा हूँ
So this year we had problem statements like one of them that we worked on was NASA ontology problem, जहाँ पे उनके पास बहुत सारा डेटा सेट्स अवेलेबल है, उसको हम लोग को हायरार्किकली सेट करना था. ठीक है. There were a lot of other as well. There were some based on like making games about it, making some awareness websites as well. So yeah, you can go ahead and check any of this. You can you know search this names itself onto the Google, and आप लोगों को उनके official websites मिल जाएंगे जहाँ पे you will get previous year questions, previous year winners probably, जहाँ पे भी available है वहाँ पे के मिल जाते हैं. And yeah, you guys can go through and practice some of those questions. For example, for coding questions, for coding combinations, you can absolutely go ahead and practice those. That will come in lot handy. Then we have Microsoft Imagine Cup and PyTorch ML hackathon. तो जैसे बाकी के सारे hackathons है, these two goes like in the same manner कि आपको problem statements दिए जाते हैं and you have to make something to solve those problem statements. Okay, so we have one question with us ki, how to secure your idea in order not to be stolen. Okay. Uh, after a lot of discussion with my team, I would like to, say that there is no idea that is, like new or novel. Usually the techniques to implement those ideas will be new. Okay. So, for example, what Harshit said was कि हाँ, उसने वो ऐप बनाया कि जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स को लाइक जो प्रैक्टिशनर्स है और पेशेंट्स को ज्वाइन करता है. सो सिमिलर ऐप एग्जिस्ट. हम लोग ने बहुत सारी बार यूट्यूब एड्स में भी देखा है कि ऐसी एप्स एग्जिस्ट करती है. द पॉइंट इज कि वो जैसे पिच करते तुम लोग वो आइडिया को और उसको जैसे इम्प्लीमेंट करते हो, दैट मेक्स इट यूनिक and that is something that you like can keep it to yourself, and that makes your app you know your own product. Yes, Prerak, link will be reshared again. That's okay. How to join coding club? Harshit, would you be able to help this? Best to my knowledge, coding club have WhatsApp groups, and you can join those WhatsApp group. Okay, the next is the absolute these are, like, I would say these are the YouTube channels that you should know. And YouTube channels, like if you're doing engineering, these are must, and specifically for, I would say, software engineering, ये YouTube channels तो आपको पता ही होने चाहिए. 3Blue 1Brown is for mathematics, so it gives you a different perspective about mathematics. Then we have Computer File. It have a lot of great videos talking about very small technologies and explaining those in very good depth. Hmm. Okay, give me a moment. Siddhant, I'm not sure about that thing because till now what they have done is कि अभी तक गूगल ने एक ग्रुप बनाया है, जितनों ने भी रजिस्टर किया है, दे हैव रिसीव्ड दैट लिंक, एंड आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है. एंड लाइक हाँ, वो गूगल ग्रुप है, वहाँ पे वो लोग रिसोर्सेस वगैरह डालेंगे, एंड एट एनी टाइम यू कैन जस्ट चेक ऑन देयर वेबसाइट, तुम लोग को वहाँ पे सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं. ओके, कंप्यूटर फाइल के वीडियोस होते हैं. फॉर अगर किसी को याद होगा तो लास्ट ईयर फेसबुक थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया था. ठीक है, नो वन वाज एबल टू रीच फेसबुक, सो कंप्यूटर फाइल इवन मेड अ वीडियो ऑन इट कि एक्चुअली क्या हुआ था एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वाज डन. ठीक है. देन एरिक्टो इज वन ऑफ द फेमस participants in I would say coding competitions. तो and he like उसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीती भी है गूगल की, तो यू कैन चेक आउट हिज चैनल. एरिक्टो ही नाम है. देन वी हैव फायरशिप के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू मोस्टली वेब डेवलपमेंट. ठीक है. देन वी हैव MDN वेब डॉक्स. अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पसंद है तो मोजिला डेवलपर नेटवर्क का आपको कुछ भी वेबसाइट लाइक कुछ भी जावास्क्रिप्ट HTML CSS के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. एक्सेप्ट फ्रॉम W3 स्कूल, लाइक आई थिंक दैट इज, तो अभी लाइक बोलना ही
That would be like, the most basic one, the W3 School and Geeks for Geeks. Then we have web.dev. ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, दैट इज अ न्यू वन. आपको यहाँ पे सारे वेबसाइट, वेब टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड गिटहब रिपोज मिल जाएंगे. ठीक है. Then we have TensorFlow का official YouTube channel. They do put on a lot of great tutorial videos. We have 2 Minute Paper. If you are interested in research and machine learning, this is the place to get started. What else I can say? Okay, PWN Function is a website, a YouTube channel that is related to cybersecurity. Then we have Real Engineering. This specific one is much more, related to those streams that works on hardware, mostly for aeronautics branch and mechanical branch. Then we have 4 suggestions from Harshit. Harshit, can you take this one on? Yeah. So like I do C++, so this is C++ specific. CPP Nuts and my core school for learning C++. My core school is also good for learning data structures and algorithm. It is the videos are quite old, but I feel they are very nice. Again, CodeChef has a lot of resources on data structures, algorithms, problems, everything, and I believe it is one of the best channels to learn about algorithms and data structures. When I was studying data structures and algorithms and implementation, I used this William Fawcett channel. It has implementation in Java, and the implementation are also, very, I would say production ready kind of implementation, because he uses try catch blocks, error handling, everything. So how data structures and algorithms are implemented in production. Yeah, and his explanation are very good, and the videos are very short as well. Thank you, Harshit, for If you taking want this. to learn about Yeah. those kind of things. So I think these are the most basic YouTube channels that you must know. Like, especially we have a lot of first year guys with us, so this would be a great start point for you all. Start exploring different channels and different fields, and just do not stick to certain technology or certain choice just because that worked out for other people's in the past. I have seen a lot of people asking for both the things, that is uh, related to going to GSOC or starting with open source projects. I'm not saying that is bad. I'm just saying start learning first. Like, start पहले कुछ चीजें सीख लो, that is most essential things, and then you will get to know actually कि तुम लोग को क्या करना है. Just following others wouldn't make it your path. That would be their path. ठीक है. So feel free to explore, and yeah, it is possible कि तुम लोग कहीं पे जाके अटक जाओगे and you face some kind of issues. Feel free to ask your seniors. ठीक है. अब GDSA club है, you have a lot of different groups now available which wasn't available previously. Abhi we have group like the box that is there, then we have the coding club group, then we have GDS's club group. So you can ask anywhere and you will get to know a lot of things. And yeah, while you're filling this form for solution challenge, also fill in the form for the campus as well. That will just let us know how many people are participating from our college, and we'll be able to cater properly. Okay, then we have some Q and A's. I think this all are already answered. Like, क्या scope हो सकता है, मैं कहाँ से ले सकता हूँ. तो I can take from 17 sustainability goals, which almost consist of everything. मैं पिछले 2 से 3 साल के अंदर मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच पाया कि ये जो 17 गोल्स के बाहर का हो. ठीक है. देन वी हैव कि मल्टीपल प्रोजेक्ट सबमिट हो सकते हैं. नहीं, एक टीम से एक ही प्रोजेक्ट सबमिट हो सकता है. ओके, द थर्ड क्वेश्चन है कि अपना सॉल्यूशन चैलेंज के, अगर मेरे यहाँ पे जीडीएसी नहीं है तो मैं सॉल्यूशन चैलेंज में पार्ट ले सकता हूँ क्या. तो 4 लोगों की टीम में से एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जिसके कॉलेज में जीडीएसी है. ठीक है. then that team can participate in solution challenge. Now moving on, जैसे मैंने हम लोग ने अभी थोड़ा डिस्क्राइब किया कि हम लोग कैसे
प्रोटोटाइप या बिल्डिंग कर सकते हैं या प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। देर आर सर्टन वीडियोस प्रोवाइडेड बाय गूगल इटसेल्फ कि जिसके अंदर दे हैव ब्रेन हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड हाउ टू मेक अ एग्जांपल प्रोडक्ट एज सॉरी एग्जांपल प्रोजेक्ट एज वेल। ये सारे के सारे वीडियोस, ये सारे के सारे रिसोर्सेस सब गूगल अपना सोल्यूशन चैलेंज पेज पे ही अवेलेबल है। अगेन लिंक विल बी शेयर्ड, आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ बट इट वुडेंट हेल्प इन एनी वे, क्योंकि इट वुड बी लाइक ऑफ लेस क्वालिटी एंड यहाँ पे बहुत सारा अभी हम लोग बोल चुके हैं। तो इट वुड बी बेटर इफ यू गाइस सी इट एट योर ओन पेस एंड एट योर ओन कंफर्ट, दैट इज ओके। हम लोग ये सारे के सारे वीडियो शेयर कर लेंगे। एंड प्लस जैसे मैंने बताया था, अगर आप लोगों का आगे जाता है, ठीक है, तो यू गाइस कैन यू गाइस गेट टू हैव योर ओन वीडियो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन जो है टॉप 10 सॉल्यूशन, उसके वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अभिनव, लिंक्स हम लोग यहाँ पे भी शेयर कर रहे हैं अभी, रिपोस्ट कर देंगे अभी वापस मीटिंग में भी। आपको ये सारे लिंक सेम अपना व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्कॉर्ड ग्रुप दोनों पे अवेलेबल कर देंगे, दोनों पे भेज देंगे। सो इफ यू आर इन ईदर ऑफ इट यू विल गेट इट, ठीक है। ओके, कैन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हर्षित, कुड यू लुक इनटू दिस कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं? And any programming language can be used. Yes, you can use any programming language, any software, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे ये चीज बनाने के लिए गूगल का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, ठीक है, लेट्स से फॉर व्हाट कुड बी इट, ओके, लेट्स से आपको जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, यू डिसाइड कि मुझे गूगल का एंगुलर यूज नहीं करना है, आई वांट टू यूज रिएक्ट, ठीक है। तो यू कैन यूज रिएक्ट, द ओनली कंडीशन इज कि एक चीज एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि दैट बिलोंग्स टू गूगल टेक्नोलॉजी। ओके, टीम रैंकिंग आई डोंट थिंक यहाँ पे है, वी जस्ट हैव टॉप 50, टॉप 10 एंड टॉप 3। आई थिंक अगर 50 भी हो रहा है ना, तो इट इज प्रिटी pretty good because you get to have an one-on-one session with a Google like person, like a Googler, so that is a great way to connect to a Googler. सो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि प्रीवियस सारे सॉल्यूशन हैकाथॉन में एटलीस्ट एक इंडियन टीम रहा है, टॉप 10 में एटलीस्ट एक इंडियन टीम तो रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर केजी सोमैया है ना, वहां से एक टीम जीता था, आई ऑफ गॉड करके है। यू कैन इवन फाइंड देयर वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल। हियर इट इज, हियर इट इज। तो उन्होंने एक बेल्ट बनाया था एंड दे मेड, यू हैव टू यूज अ वीआर हेडसेट एंड अ बेल्ट फॉर ब्लाइंड पीपल, वो उनको नेविगेट करता है। यस, मनस राज। हाँ, अगर आप कुछ भी गूगल का टेक्नोलॉजी, एक गूगल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, दैट इज इनफ। एंड दैट इज इट from our side. This is all the things that we have to share related to solution challenge. Let us see, is there any other questions? Okay, yes. So I would like to summarize the whole thing कि आप 1 से 4 लोगों का टीम बना सकते हो, एटलीस्ट वन गाय शुड बिलोंग टू अ कॉलेज वेयर GDSC is situated. You have 17 UN sustainability goals, out of which you have to select one. One or more than one is also okay, but at least एक को बहुत अच्छे से टारगेट करना है एंड आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन देना है। देन आपको एटलीस्ट एक गूगल टेक्नोलॉजी यूज करना है। यू गाइस हैव टाइम टिल 31st March,
टू सबमिट योर सॉल्यूशन. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. यू गाइस कैन फर्स्ट डिसाइड कि मुझे ये बनाना है, एंड ये बनाने के लिए क्या क्या लगेगा. यू गाइस कैन go ahead and learn that. That is absolutely okay, and that is what previous winners also have been doing. So, and yeah, there are prizes. I think that is like obvious by now. If there is anything else that you guys would like to know or have, shoot it in the chat box. Okay, Yadav is asking how to become a member. uh, you just have to go to like GDSC का uh, यहाँ पे चैप्टर लिंक भी दिया हुआ है, बस आपको वहां पे जाके ज्वाइन करना है, एंड दैट्स ऑल. Will we get any point and credits? I didn't got it, Dhruv. अगर आप AICTE पॉइंट्स या कॉलेज क्रेडिट्स का बात करें तो दैट इज नॉट एनीथिंग दैट इज बिन कंफर्म्ड फ्रॉम द कॉलेज साइड. ओके, फॉर लास्ट ईयर हम लोग ने क्या, ओके, सो लास्ट ईयर हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, बट या इफ यू गाइस वांट आई कैन शेयर कि हम लोग ने क्या प्लान आउट किया था. तो लास्ट ईयर व्हाट वी सॉ वाज कि व्हाट्सएप के अंदर वी गेट अ लॉट ऑफ लिंक्स. ठीक है, हम अभी भी देखा है कि ये सेम भी जितना टाइम ऑनलाइन है, हम इतने सारे लिंक्स आते हैं सुबह से लेके दोपहर तक के अंदर. अपना मीटिंग लिंक्स आते हैं, फॉर्म लिंक्स आते हैं, असाइनमेंट के लिंक्स आते हैं, एंड इतने सारे लिंक्स है ना कि इट बिकम्स हैसल टू फाइंड क्या लिंक इंपॉर्टेंट है और क्या करना था. मैसेजेस भी पूरा मेस्ड अप हो जाते हैं, कुछ मैसेजेस अपने लिए है, कुछ नहीं है. फिर लाइक मूविंग ऑन, लाइक अभी हम लोग को ऐसा हो जाता है कि तीन चार अगर मैसेजेस आते हैं ना, तो इट बिकम्स अ लाइक अलग अलग जगह से तीन चार सेम मैसेजेस आते हैं. इट बिकम्स अ लॉन्ग क्लस्टर्ड फॉर्म ऑफ मेस, एंड वहां पे कुछ भी नहीं समझता है करना क्या है. तो वी डिसाइडेड टू मेक एन ऐप दैट वुड बी वेरी सिंपल, कि आपको जो कोई भी फैकल्टी रहेगा उनको एक जूम का मीटिंग लिंक क्रिएट करना है. दे विल पुट इन द लिंक एंड दे कैन जस्ट विद अ सिंगल प्रेस दे कैन शेयर इट विद द क्लास. तो क्लास को वो ऐप के ऊपर उनको जो मीटिंग ज्वाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी सुबह 9:30 का क्लास है, तो उसको वो दिखाएगा कि 9:30 को तुझे ये क्लास ज्वाइन करना है. मुझे सिर्फ उतना ही देखना है, मुझे ऐप में जाके देखना है भाई अभी 9:30 बजा है, ये क्लास ज्वाइन करना है, इसके बाद कौन से क्लास है. मेरे को और कुछ भी नहीं देखना एक्स्ट्रा. ठीक है, सो दैट वाज आवर आइडिया. एंड देन वी इंक्लूडेड एक्स्ट्रा फीचर्स सच एज कि अटेंडेंस वहां पे ले सकते हैं, यू कैन शेयर योर अपना असाइनमेंट वगैरह है, एंड वी मेड अ स्मॉल फोरम, वी डिसाइडेड टू मेक अ फोरम एंड ऑल. Okay, next question you have from Praveen. How can I bring GDSE to my college? Okay, Praveen, सेम चीज GDSE का वेब सर्च करोगे ना, तो GDSE का एक ऑफिशियल वेबसाइट है. वहां पे ना यू कैन सी प्रोसीजर लिखा हुआ है, हाउ टू बिकम अ लीड एंड ऑल. And I think that is all related to solution challenge that I would like to share. And yeah, those who do not have any doubts and would like to leave can leave. That is okay. And those who have doubts, stick around. I am here to answer your doubts. That's okay. So yeah, Pratikshit Pandey have. Okay. सो प्रतीक्षित एज हर्षित सजेस्टेड, हम लोग भी सेम चीज फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, कि हम लोग के पास तीन चार अलग अलग
प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हम लोग को तीन चार अलग अलग प्रॉब्लम पसंद है, बट उसमें से हम लोग एक ही कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो कौन सा करेंगे? ठीक है। अ, एक सेकेंड ना गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। या, तो जब तीन चार अलग अलग प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, तो राइट वॉट एवर सॉल्यूशन यू हैव एंड उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, एंड क्या करो, मेक लाइक, मैं ऐसे किया था कि वी हैव लाइक फोर गाइज इन आवर ग्रुप, तो हम चारों ने बोला था कि सब लोग अपना अपना सॉल्यूशन दो, एंड सब लोग उसके ऊपर अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स बनाओ, ठीक है। तो फॉर 3 to 4 आइडियाज यू कैन डू इट, कि भाई कम नंबर है, तो मेक ऑल द प्रोज एंड ऑल द कॉन्स, और फिर वो देखो कि तुम लोग उसका कितना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। मे बी योर आइडिया इज आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज एन एब्सोल्युटली ग्रेट आइडिया, बट अगर समझो मैं उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता, तो आइडिया विनिंग आइडिया नहीं बनेगा ना। तो उससे बेटर है कि मैं कोई ऐसा आइडिया लूँ दैट माइट नॉट बी आउट ऑफ द बॉक्स, बट मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, है ना। एट द एंड क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो एक्चुअली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन ट्राई आउट दैट वे। सिद्धांत, अगर आपके कॉलेज में जीडीएससी है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, बट एट आर एंड, अगर समझो आप ग्रुप बना दो, ठीक है, लेट्स से यू एंड अदर पीपल्स फ्रॉम आवर कैंपस, यू ऑल गाइज आर मेकिंग द ग्रुप, तो फिर तुम सब लाइक ऐसा, अगर मल्टी कैंपस ग्रुप है, तो कोई एक कैंपस का नाम जाएगा, दैट यू गाइज कैन डिसाइड अमंग योर सेल्फ कि तुमको कौन से यूनिवर्सिटी के थ्रू जाना है, ठीक है। Yes, Kanchan, it is not compulsory to make an app or website. You can make anything that works or solves that issue. Yes, प्रतीक्षित, अगर कोई चीज एग्जिस्ट करता है तो ट्राई टू से कि तुम लोग जो चीज बना रहे हो या दे रहे हो, वो क्यों बेटर है उससे। ये सिद्धार्थ, सिर्फ सबमिशन के टाइम पे नाम जाएगा। Kanchan, only ppt or video, nice solution challenge में you have to give something that is made, like that is implemented. Welcome. That would work. हर्षिता, दैट वुड वर्क। सो हर्षिता's क्वेश्चन है कि अगर समझो मैं फॉर्म भरते वक्त मैंने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज चूज किया, बट मैं उसमें से कोई एक ही यूज कर रही हूँ, विल इट वर्क? सो यस, एब्सोल्युटली, दैट इज ओके। अभी जो आप फॉर्म भरे हो ना, दैट इज टेंटेटिव, कि आप क्या प्लान कर रहे हो अभी, जब आप फॉर्म भरते वक्त क्या प्लान करना चाहते हो। कि लेट्स से मैं अभी स्टार्ट करते वक्त मैंने सोचा कि आई वुड मेक समथिंग दैट इज हेल्पफुल टू पॉवर्टी, मैं कुछ एनजीओस के लिए ऐप बनाना चाहता हूँ, दैट वुड बी अ वेबसाइट एंड दिस, तो मैंने उसके हिसाब से फॉर्म भरा, बट आफ्टर फॉर्मिंग अ टीम एंड आफ्टर हैविंग अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, आई डिसाइडेड कि मुझे इससे बेटर है कि एक ऐप बनाता हूँ जो एजुकेशन में हेल्प करेगा, तो चेंज कर दो प्लान, कोई इशू नहीं है। प्रतीक्षित, एक्चुअली आप ऐसे ही ना ग्रुप पे डाल दो, व्हाट्सएप का ग्रुप है या डिस्कॉर्ड का ग्रुप है, कि दिस इज अपना, यू नो मैं टीम देख रहा हूँ, अगर कोई अवेलेबल है ना, तो पिंग मी और समथिंग लाइक दैट,
तो आपको वहां से बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे से। Yeah, I think that's all from, if that is all from, your side, guys. If you do not have any more questions, I think I will end the meeting. Okay, then thank you guys for joining us. It was a great time. You guys, like, we didn't expected a lot of like overflow of our registrations, but it did happen, and we are very much happy about it. We will make sure we have extra seats next time onwards. And thank you guys. Have a great day. Bye bye.